So till now we have discussed about the basic properties of D and F block elements. Continuing still the properties of D block elements, we have seen till now the D block elements are having atomic radii varying in irregular manner, similar is with ionization enthalpy. Now let's continue further the topic that we had been discussing, that what are the nature of the halides and oxides that group 3 to 12 elements form, that is D block elements where they combine with fluorine and oxygen. What is the nature of them? So we had been discussing the trend and stability of higher oxidation state. Now the compounds are highly stable when the compounds are formed of transition element with fluorine and oxygen. Why? Because F and O are highly electronegative elements, so they combine with the transition elements to form compounds and they are stable. Fluorine stabilizes because of high lattice enthalpy, and oxygen stabilizes the highest oxidation state due to its ability to form multiple bond with the metal. Multiple bond means it will form either double double bond, that is p pi bonding, or d pi bond formation can take place with oxygen, which is not so in the case of fluorine atom. So with oxygen the metal will have highest oxidation state. Now all copper 2 halides are known except the iodide, that is Cu I2 is not known. In this case Cu2 plus oxidizes iodide to iodine, this is iodine I2. So Cu2 plus 4I minus, so Cu2 plus will gain an electron and convert to +1, and I minus will turn to I2. Okay. Now however many copper 1 compounds are unstable in aqueous solution. तो ज़्यादातर compounds unstable होते हैं aqueous solution में. Why? And they undergo disproportionation. So you will have Cu2 plus forming Cu plus and Cu. ठीक है, you will have the formation, एक ने तो इलेक्ट्रॉन गेन किया और दूसरे ने लूज किया. Now the stability of Cu2 plus rather than Cu plus. Now which is more stable, 2 plus or Cu plus? So in aqueous Cu2 plus is more stable due to more negative hydration enthalpy of Cu2 plus than Cu plus, which compensates for the second ionization enthalpy of Cu, because to remove the second electron, that is from 3d10, it is difficult, but the hydration enthalpy will compensate that for Cu2 plus. So Cu2 plus is stable only in aqueous state, not in any other state. And the disproportionation reaction is as follows. You have Cu plus losing one electron to form Cu2 plus, gaining one electron to form Cu. This is the disproportionation, this is oxidation, and this is reduction, and such reaction are called disproportionation. So Cu plus turns to Cu2 plus in aqueous state. The transition metal also exhibit highest oxidation state in oxide. Very important कि जब भी transition metals होंगे that they will have highest state in oxide. Now why is it so? The ability of oxygen to stabilize the higher oxidation state are much higher than fluorine because it can form multiple bond. Now the highest oxidation state with fluorine by manganese is +4. While with oxygen it is +7 in Mn2O7, and oxygen has ability to form multiple bond with metal atom, which results in the highest oxidation state of metal with oxygen. So these are the different oxo compounds of transition metal with higher oxidation state, like chromium with oxygen forms +6, the manganese form +7, Fe +3, cobalt +2. So these are the elements with different oxidation state, and maximum oxidation state is with oxygen, not with fluorine. Even though fluorine is more electronegative, oxides are having higher charge because it forms multiple bond.
The highest oxidation number in oxide coincides with the group number and is attained in Sc2O3, that is scandium oxide का ग्रुप नंबर. स्कैंडियम बिलोंग करता है थर्ड ग्रुप को और यहाँ पर वो +3 स्टेट में है. मैंगनीज MnO2 7 में Mn+7 में है. यानी कि द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप D block with oxygen is that of the group number. Beyond group 7, no higher oxide of Fe above Fe2O3 are known, although we have ferrate in +6 state, but these are formed only in alkaline media and they readily decompose to give Fe2O3 and O2. तो Fe अगर +6 में भी होगा तो वो decompose हो जाएगा into Fe2O3 and O2. Besides the oxide, oxocation stabilizes vanadium 5 as VO2 plus, V4 as VO2 plus and titanium 4 as TiO2 plus. तो बाकी के oxocation भी stabilize हो जाते हैं in different oxides. Now the next property is standard electrode potential, and the electrode potential value is referred in terms of reduction potential. एक मेटल कितने रेडिली इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. सो रिडक्शन पोटेंशियल वी विल बी डिस्कसिंग in standard electrode potential. Now electrode potential are the measure of the value of total enthalpy change. The electrode potential value depends on enthalpy of atomization and hydration enthalpy. Very important that electrode potential value depends on enthalpy of atomization as well as on hydration enthalpy. Lower the standard reduction potential, the more stable is the oxidation state of the metal in the aqueous state. अगर एक सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, यानी कि अगर एक Mn प्लस है वो n इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और m में बदल रहा है और उसका E नॉट लेस है, यानी कि कम पॉजिटिव लेस, दैट मीन्स ये Mn प्लस में स्टेबल है इसलिए वो रेडिली गेन नहीं कर रहा. अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव होता है यानी कि वो अपने आप गेन कर रहा है तो वो स्टेबल ज़्यादा होता दूसरे मेटल फॉर्म में. फॉर द फर्स्ट रो मेटल्स द ई नॉट वैल्यूज आर गिवन एंड इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ, यहाँ पर आई विल जस्ट राइट, ये इसमें बदल रहा है M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर M में बदल रहे हैं. M इज़ अ जनरल मेटल, वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज. जो मेटल डाइवैलेंट स्टेट में स्टेबल होगा वो रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा एंड इट विल हैव मोर पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू. उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा पॉजिटिव जो M2 प्लस में स्टेबल नहीं है, और जो M2 प्लस में स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन को रेडिली गेन नहीं करेगा और उसका ई नॉट नेगेटिव होगा. तो ज़्यादा नेगेटिव का मतलब वो +2 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है. Now if you see the value over here, vanadium has a negative value, negative 1.18, that means V2 plus is stable. Coming to chromium, the Cr2 plus has less stability, so that means less negative यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव. फिर अचानक से मैंगनीज पे आए तो Mn2 प्लस पे नेगेटिव वैल्यू फिर बढ़ गई. Now here the increase is because the configuration is 3d5. क्या कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे मैंगनीज का? 3d5 4s0 हाफ फिल्ड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रेडिली गेन नहीं करेगा. सो इट हैज़ मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल. ना आफ्टर दैट अगेन देखो यहाँ से यहाँ वेनेडियम से क्रोमियम डिक्रीज़ हुआ, फिर अचानक इंक्रीज़ हुआ रिडक्शन, मतलब नेगेटिव साइड में इंक्रीज़ हुआ, फिर कम हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव साइड में, और कम हुआ. तो यहाँ तक तो वेरिएशन सही चलते रहे. यहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसी आए क्योंकि हाफ फिल्ड था, ये रेडिली गेन नहीं करता. बट निकल के बाद कोबाल्ट और निकल में भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा. इट्स -0.28 एंड दिस इज -0.25. यहाँ पे इसलिए नहीं आया बिकॉज निकल की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने में हेल्प कर देती है, वरना और ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए था. ठीक है, लेस नेगेटिव होना चाहिए था फॉर निकल, बट होता कैसा है, कम नेगेटिव. द डिफरेंस बिटवीन कोबाल्ट एंड निकल इज वेरी लेस. बट फ्रॉम निकल टू कॉपर, नाउ इफ यू सी
here the variation is more, मतलब Cu2 प्लस तो फटाफट से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu में बदल जाएगा, ठीक है. that means Cu is more stable and its reduction potential value tells us that it is positive 0.34. अगर किसी का reduction potential बहुत ज़्यादा positive है, any metal you have, जिस भी चार्ज में है वो मेटल में स्टेट कन्वर्ट हो रहा है, अगर उसका रिडक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट इज़ लेस रिएक्टिव मेटल. एंड कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव. वो ऑक्सीडेशन अंडरगो करना पसंद नहीं करता, बल्कि वो रिडक्शन करना पसंद करता है. और जो रिडक्शन जितना ईजिली करेगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा पॉजिटिव और बड़ा होगा. नाउ द इरेगुलरिटीज आर देयर. The values are not regular, which can be explained from the irregular variation of ionization enthalpy and also enthalpy sublimation enthalpies, which are relatively much less for manganese and vanadium. Manganese और vanadium के लिए sublimation और enthalpy कम है, क्योंकि वहाँ पे unpaired electrons जो decay थे वो use नहीं हो रहे bonding में, and metallic bonding weak होती है. That is why they readily sublime and they have less positive or more negative reduction potential. Now you see the graph. There is a reduction potential on y-axis and on x the elements. तो टाइटेनियम से 18 क्रोमियम तक नेगेटिव वैल्यू कम हो रही थी, फिर अचानक से क्रोमियम में मैंगनीज पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई, नेगेटिव 1.18. फिर थोड़ा सा बढ़ा, लेस नेगेटिव हुआ, फिर डिक्रीमेंट हुआ थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन आया, और निकल के बाद कॉपर में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ. एंड हियर द इंक्रीमेंट इज मोर बिकॉज Cu2 प्लस की हाइड्रेशन एंथैल्पी उसको कॉम्पनसेट करती है. नाउ द E0 वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी important. The E0 value for copper is positive. And why? This is because it has high enthalpy of atomization and low hydration enthalpy. Great amount of energy is required to transform Cu to Cu2 plus. और ये यहाँ से ये एनर्जी हमें मिल जाती है. So it has more positive hydration, more positive reduction potential. Due to the positive reduction potential, copper does not liberate hydrogen from acid and it is less reactive. The general trend towards less negative E0 value across the series is related to the increase in the sum of first and second ionization enthalpy. तो क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो दोनों को निकालने में जितनी एनर्जी लगी थी उनका सम हम डिस्कस करते हैं. It is interesting to note that the E0 value of manganese, nickel and zinc are more negative than the expected trend. यहाँ पे exceptional character आ रहा है, that is they are more negative E0 values as expected from the trend and the reasons are different. यहाँ पे half filled है, ये full filled है और इसकी hydration enthalpy बहुत ज़्यादा है. So that is the reason. Now the stability of half filled D subshell in Mn2 plus and completely filled D10 in Zn2 plus are related to the E0 values, whereas the E0 value for nickel is related to highest negative hydration enthalpy. तो निकल का ट्रेंड क्यों अलग हुआ? क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है. The value of scandium reflects the stability of Sc3 plus, which has a noble gas configuration, as scandium has a configuration in the 3 plus state as that of argon. तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में उसकी E0 वैल्यू कम होगी और वो रेडिली इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते. द हाइएस्ट वैल्यू फॉर जिंक इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल D10 configuration of Zn2 plus. The comparatively high value of Mn shows that Mn2 plus D5 is particularly stable, whereas low value for Fe show extra stability of Fe3 plus in D5. So reduction potential depends on electronic configuration and the stability. The one that has more positive reduction potential will be less stable in the oxidation state and it will readily gain electron, acting as a less reactive metal. On the contrary, the one that has less negative less positive or more negative reduction potential means it has difficulty in gaining electron and it is stable in its own oxidation state. Now let's discuss the chemical reactivity of D block. Transition metals are vary widely in their chemical reactivity. Many of them are electropositive and they dissolve in mineral acid.
although a few are noble. That is why they are unaffected by simple acids like platinum, gold, copper. The metal of first series, with the exception of copper, are relatively more reactive and oxidized by 1 molar H+. Though the actual rate at which these metals react with oxidizing agent like H+ is sometimes slow. तो रिएक्शन रेट स्लो हो सकती है, बट कॉपर के अलावा 3D में सब रिएक्ट करते हैं. The E0 value of M2 plus to M indicate a decreasing tendency to form divalent cation across the series, right? Because E0 value कम negative है. This general trend towards a less negative reduction potential is related to the increase in the sum of first and second ionization enthalpy. And it is interesting to note that manganese, nickel and zinc are more negative than expected trend. Reason we have discussed earlier. The E0 value for the redox couple, that is a trivalent turning to divalent, shows that trivalent of Mn3 plus and CO3 plus are strongest oxidizing agent. यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेडिली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे. कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? अगर M3 प्लस कम स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर M2 प्लस में बदल जाएगा. सो इफ आई टॉक अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल व्हेन M3 प्लस चेंजेस टू M2 प्लस, अगर कोई M2 प्लस में ज़्यादा स्टेबल है तो 3 प्लस रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसकी E0 वैल्यू उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव आएगी. And they will act as strong oxidizing agent. The ions Ti2 plus, V2 plus and Cr2 plus are strong reducing agent because they are more stable in the divalent state and they will release hydrogen forming a dilute acid. तो ये क्या करते हैं? reducing agent है. Cr2 plus reducing agent है, यानी कि वो रेडिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा. और 3 प्लस, तो इसका ट्राइवेलेंट स्टेट ज़्यादा स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन को रेडिली गेन नहीं करते, ये ट्राइवेलेंट में लेते हैं, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा. एंड Cr2 प्लस चेंजेस टू Cr3 प्लस बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज बीन गेन बाय H प्लस टू फॉर्म H2. Next, magnetic property. Now, the substances which contain species atom ion molecule with unpaired electron in the orbital are paramagnetic. Paramagnetic substances are weakly attracted by the magnetic field, and the one that are strongly attracted are called ferromagnetic substance. Substances which do not contain unpaired electron are repelled by magnetic field and diamagnetic. Now, transition metal की property क्या है? Transition metal के पास unpaired electron है D में, so they are paramagnetic in nature. And the paramagnetic behavior increases with increase in number of unpaired electron. And paramagnetism is expressed in terms of magnetic moment, which is equal depending on the number of unpaired electron. The magnetic moment is calculated by spin only formula, that is magnetic moment mu is equal to under root n into n plus 2. Bm stands for the unit Bohr magneton. N is the number of unpaired electron. Bohr magneton is a unit of magnetic moment. And single unpaired electron has a magnetic moment 1.73 bm, nearly equal to 2. तो अगर एक unpaired electron है तो 2 bm तक होगा. The magnetic moment of an electron is due to its spin angular momentum and orbital angular momentum, but we normally consider spin momentum. And ये देखा गया है कि D block के ज़्यादातर elements unpaired electron ज़्यादा रखते हैं तो उनका magnetic nature ज़्यादा होगा. बट किसका ज़्यादा होगा? जिसके पास unpaired electron ज़्यादा होंगे उसका magnetic moment ज़्यादा होता है. और there is slight variation in expected and actual magnetic moment. Now next, transition metals have the ability to form colored ions. अब ये अगली property है transition metals की कि वो colored ions form करते हैं. Now they form colored ion when an electron from a lower energy d orbital is excited to a higher energy d orbital. The energy of excitation correspond to the frequency of the light absorbed. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लो से हाई पे गया क्योंकि डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, तो लो डी से हायर डी पे वो चला जाता है, एक्साइट हो जाता है, और जब वो वापस से आता है तो वो लाइट एमिट करता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इन द विजिबल रेंज, एंड दैट इज व्हाई इट गिव्स कलर. दिस फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन विजिबल रीजन. द ऑब्जर्व्ड कलर करस्पॉन्ड टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द लिगैंड. Zinc 2 plus, cadmium 2 plus have all d orbital fully filled and these are having no color. Also Ti4 plus में d orbital सारे vacant होते हैं तो उसके भी color नहीं होते.
एंड ऑल्सो वी हैव Sc3+ दैट इज ऑल्सो कलरलेस. इनके कोई भी कलर नहीं है क्योंकि या तो फुल्ली फिल्ड है या डी ऑर्बिटल पूरा खाली है. सो नो डी टू डी ट्रांजिशन टेक प्लेस. तो डी से डी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा रेडिएशन, और वो कलरलेस होते हैं. ठीक है, सो यू नीड टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन एंड जस्टिफाई योर आंसर. नेक्स्ट, formation of complexes. Metal ion combine with or bind with a number of anions or neutral molecule giving complex. These are complex. This is due to comparatively small size of the metal ion, high ionic charge and availability of d orbital for bond formation. तो ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, चार्ज ज़्यादा होता है और डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, जिससे ओवरलैप कर कर वो इलेक्ट्रॉन को रखवाने की जगह मिल जाती है क्योंकि डी ऑर्बिटल खाली था, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड. ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. इंटरस्टिशियल का मतलब जो मेटल लैटिस होते हैं, मेटल अगर ये मेटल है, ये मेटल है, ये सर्कल वाले मेटल जब एक दूसरे के पास आते हैं, मेटल बॉन्ड बनाते हैं, एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है. उस 3D के अंदर कुछ वेकेंट स्पेस होती है. ठीक है, ये एक्सटेंड होता जाएगा इन ऑल द डायरेक्शन. अब जब ये स्पेस खाली है, दिस इज अ वेकेंट स्पेस, इसको क्या कहते हैं? दिस इज टर्म्ड एज इंटरसाइट. और इस इंटरसाइट पे अगर छोटे एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन ट्रैप हो जाते हैं, तो जो कंपाउंड बनते हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड. When small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the lattice of metal, the compounds are called interstitial compounds. These are usually non-stoichiometric, यानी कि मेटल और दूसरा जो सब्सटेंस है उनका रेशियो फॉर्मूले से डिराइव नहीं हो रहा, या उस रेशियो में वो नहीं है जो फॉर्मूला दे रहा है. सो दे आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक. एग्जाम्पल, टाइटेनियम कार्बाइड, मैंगनीज नाइट्राइड, फेरिक हाइड्राइड एक्सेट्रा. And these interstitial compounds have high melting point, higher than those of the pure metal. They are very hard. Some borides approach diamond in hardness. वो इतने हार्ड है कि अगर बोरोन के साथ वो जुड़ जाते हैं और बोराइड बनाते हैं, उनकी हार्डनेस डायमंड जितनी होती है. They retain metallic conductivity, but they are chemically inert. These are the properties of interstitial compounds. Next, now these D block are very important as they form a very important compound called alloy. Because of similar radii, other characters of transition metals and other features, they are able to form alloy. तो alloy क्यों बनते हैं? क्योंकि उनका radii similar होता है. And what are alloys? These are homogeneous mixture of two or more metal, or a metal with a non-metal but in a particular ratio. The alloys so formed are hard and often have high melting point. The ferrous alloys are chromium, vanadium, tungsten, molybdenum and manganese are used for the production of steel and stainless steel. तो स्टील में हम क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, molybdenum और मैंगनीज का यूज करते हैं along with Fe. All alloy of transition metal with non-transition metals such as brass, bronze are used. तो alloys भी बनते हैं. Next is these transition metals are widely used as catalyst. तो इनकी catalytic activity होती है. And the reason is because they are able to adopt variable oxidation state to form complexes. वो एक से ज़्यादा oxidation state show कर सकते हैं. That is why these elements are used as catalyst. For example, Fe3 catalyze करता है एक reaction which is the conversion of iodide to iodine. आयोडाइड से आयोडीन इलेक्ट्रॉन का लूज करवाने का काम Fe3 का है और खुद Fe2 में बदल जाएगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. तो Fe3 Fe2 में बदला और फिर Fe2 Fe3 में बदला और वो इलेक्ट्रॉन उसने S2OA2- को दे दिए. तो स्टेप वाइज हुआ. तो Fe3 Fe2 में बदलने की एबिलिटी रखता है, इसलिए Fe इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. The next important property of D block member is disproportionation reaction. These D block element, due to the variable oxidation state, they have the ability to change or exist in more than two different oxidation state in a chemical reaction, and that is called disproportionation reaction. So when a particular oxidation state become less stable relative to the other oxidation state, one lower, one higher, it is said to be undergoing disproportionation reaction. For example, manganese 6 become unstable relative to manganese 7
and manganese 4 in acidic solution. So the transition elements undergo disproportionation reaction and it turns into one lower and one higher oxidation state as that of the respective state. Now for example, manganese 6 turns to manganese 7 and manganese 4. 7 में जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इट्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन, और 4 में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, दैट इज रिडक्शन. तो यहाँ पे वो 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है मैंगनीज एंड सच इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोएनाइन ऑफ metals. The elements of first transition series forms a variety of oxide of different oxidation state having the formula MO, M2O3, M3O6, MO2 and MO3. तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स होते हैं वो बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं और हर ऑक्साइड में मेटल का चार्ज अलग अलग होता है. ठीक है. These oxides are generally formed by heating the metal with oxygen at high temperature. Now we shall see the nature of the oxides. Scandium form only one oxide and that's basic in nature because it is having +3 oxidation state. Titanium form basic oxide and amphoteric oxide. Basic oxide when the charge is +2 and +1, but when it is in +4 it is amphoteric. It is +2, +1, +4. And vanadium forms basic oxide in VO, V2O3, but in VO2 and V2O5 it forms in VO2 +4 state, amphoteric, and in +5 it is acidic. So as the charge increases on the metal, the acidic character increases or basic character decreases. Chromium forms oxide CrO, Cr2O3, CrO2, CrO3. It's over here in +2, +3, +4 and +6 state. So as the charge increases, basic character decreases. So these are the similar kind of variation that are seen in manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. So it forms different kind of oxide. In general, lower oxidation state metal form basic oxide, higher oxidation state form acidic, and in intermediate oxidation state form amphoteric. Manganese in +2 is basic, +3 is basic, but in 8/3 it is amphoteric, +4 amphoteric, and in +7 it is acidic in nature. So these are the nature of the oxides of the transition metals. In higher oxidation state they are acidic, but in low oxidation state basic, and in intermediate amphoteric in nature.